Hello everyone, this is Dr. Vikas Kumar. On behalf of Chetan Bharat Learning, I very cordially welcome all of you once again to the session on CLAT English. Well, in this series, we are trying to help you with reading comprehension. We are trying to understand reading comprehension. We are trying to make you good at reading comprehension by giving you a good, decent practice of reading comprehension passages. Very soon, we shall bring another video where we shall discuss what to do, what not to do while reading a passage anyhow. So let's continue the practice. Great. So the use of intoxicants is as old as civilization itself. There is no doubt about the fact. In varying degrees, people in all parts of the world have been using intoxicants, नशे वाली चीजें, in one form or the other. Olden days में ये limited था to some happy या festive occasions, उसी पे किया करते थे लोग. लेकिन जैसे टाइम चला आगे, लोग ज़्यादा से ज़्यादा और लाइफ कॉम्प्लिकेटेड और बिजी होती गई, लोग ज़्यादा से ज़्यादा इनको यूज़ करते रहे. विद द प्रोग्रेस ऑफ साइंस, जैसे साइंस आगे चली, टेक्नोलॉजी बढ़ी, वेरियस टाइप्स ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स भी इन्वेंट हो गए. और आज in addition to a very large number of existing drugs and organic intoxicants, कुछ और strong intoxicants easily available हैं market में, जो medical intoxicants भी हैं. Use of intoxicants और जो drugs है, it is इतना common today that worldwide problem ये हो गया है, global problem हो गया है. Neither the poor developing countries nor the rich affluent countries are free. So गरीब हो, डेवलपिंग हो, डेवलप्ड हो, सारी कंट्रीज में ये प्रॉब्लम है. जो रिच सोसाइटीज है ना, दे हैव प्रॉब्लम्स ऑफ ब्रोकन होम्स. अक्सर रिच लोग आइसोलेटेड महसूस करते हैं खुद को, अकेलेपन की प्रॉब्लम, ब्रोकन होम्स की वजह से, लेट नाइट क्लब लाइफ, एब्सेंस ऑफ सोशल कंट्रोल्स, इस वजह से दे आर मोर प्रोन टू इट. द पुअर कंट्रीज ऑन द अदर हैंड, उनकी अलग प्रॉब्लम्स हैं. प्रॉब्लम्स ऑफ फूड, कपड़े नहीं है, they are not rich enough, right? So these things also occupy their minds. Now, under the impact of these problems, generally young boys and girls जो बहुत mature नहीं होते हैं, right? उनको ये चीज़ बहुत जल्दी हिट करती है. They become frustrated and broken क्योंकि उनके पास बातचीत करने के लिए कम लोग होते हैं. So they take refuge in this, right? So most of them try to find consolation or relief in trying to escape the realities of their life, right? So by taking recourse to intoxicating drugs, नशे में वो अपना थोड़ा सोलेज ढूंढते हैं, succor ढूंढते हैं, relief ढूंढते हैं. So होता तो temporary है, but it does give them a temporary relief for long-term problems. The situation is quite alarming. Alarming मतलब खतरनाक है भाई, समझ जाएं फ्यूचर में और बुरा हो सकता है. More and more young boys and girls addicts बन रहे हैं. एक सर्वे रिसेंटली किया गया था in some universities in India, जो फाइंडिंग्स थी वो डरा देने वाली, हैरान कर देने वाली है, स्टैगरिंग, हैरान कर देने वाली हैं. ड्रग एडिक्शन बहुत तेजी से यंग इंडियन बॉयज और गर्ल्स में फैल रहा है. And it is mainly confined to big cities like Mumbai. यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, जहाँ पर नाइट लाइफ ज़्यादा है. The universities and colleges of the country, hostels जो अब है ना, वो homes बन गए हैं these drug addicts के, और बहुत easily available भी हो जाती है. In India, the malady is the disease of the use of drugs west से आया है. It has now assumed serious proportions. बहुत सारे स्टूडेंट्स ड्रग्स लेते हैं एज अ मैटर ऑफ फैशन और आउट ऑफ क्रेज, पहली बार बस, राइट. लेकिन वंस द बिगिन, उनसे रुका नहीं जाता है, वो ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं. द मार्केट इज फ्लडेड. मार्केट में इतनी सारी ड्रग्स हैं दैट इंड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटॉक्सिकेशन. अलग अलग तरीके का नशा वो देती हैं. ज़्यादातर इनमें से आर रिक्वायर्ड टू बी टेकन टू प्रोड्यूस sedation or tranquility. What is sedation? Tranquility, peace. भूल जाए, सारी चीज़ों को भूल जाता है इंसान, right? Under strict medical observation and care, they're meant to provide proper treatment of certain diseases of the mind. Actually, पर्पस तो यही था बनाने का कि जो लोग एक्चुअली डिप्रेशन से परेशान होते हैं, एंग्जाइटी के पेशेंट्स हैं, उनके लिए ये बनी है कि ताकि टेम्पररी उनको रिलीफ मिल जाए. लेकिन पीपल हैव स्टार्टेड यूजिंग देम, नॉट स्टार्टेड नाउ, अप टू दे हैव बिकम एक्सपर्ट्स एट इट. दे आर यूजिंग दीज ड्रग्स इन अ वेरी negative manner.
but young boys and girls start taking them without medical advice, क्योंकि उनका purpose वो तो है नहीं. So in accordance with the passage, the role of the West has precisely been, मैं आपको वापस लेकर चलूंगा यहाँ. It has come from the West. ठीक है, देख लिया, चलिए. To popularize drugs in India, popularize तब होता had drugs already been here and West only popularized it. It was not here. The passage says that it was brought from the West. To transfer का मतलब है एक जगह से उठा के दूसरी जगह. ऐसा नहीं है कि अब वेस्ट में नहीं है. पहले लिखा था that it's a worldwide problem. To propagate improper use of drugs? No. वेस्ट ने improper use of drugs propagate नहीं किया. उन्होंने drugs भेजी हैं to engender a disease, malady. देखिए, disease of the use of drugs, which never existed in India. वेस्ट से ही आई है. Which of the following is inferable in accordance with the passage? Many youngsters have been trapped by the people. This is stated, so ये आंसर नहीं हो सकता. Had the problem of drug addiction not existed in the West, it could have been thwarted from reaching India. Correct. Had it not been there, it would have never come here. Because आया तो वहीं से है. Drug addiction is rampant. Stated. Drugs come in various kinds. Stated directly. So option 2. What is the theme of the passage? Drug addiction is a global problem. This is a passing reference. We find a passing reference, but this is not the passage. It is about India. Drug addiction is unrestrained and thus it may expectedly shoot up. Looks likely to be the correct answer. Because in the entire passage, the focus of the author has been on how rampant it is and it is still growing, right? Drug addiction is the biggest problem? Not at all, because we have not discussed the other problems. Drug trade is rampant and hampering the economy. We have not talked about the economy. Therefore, option B is the best choice. Next one. What should be the most appropriate title from the given options? Now, the title must encapsulate the central idea. Drug addiction and its impact? Not at all. Drug addiction in India? All right. No. Because we have talked about the entire world. No. It is rampant and a growing problem in India. Rampant. This is the most important thing. The entire passage shows that it is rampant in India. It is a global problem, yes, but it is rampant in India. I mean, the most part of the passage discusses this. What does the word alarming mean? Definitely something that raises, concern. So, ominous. Something ominous means that something bad is about to happen. So, see, expected to shoot up, the central idea, and ominous. Quite easy, right? Intimidating, डराने वाला नहीं है, ये तो फ्यूचर के लिए अलर्ट कर रहा है आपको. Staggering तो हैरान कर देने वाला, और startling भी same meaning है. Ominous, therefore, is the correct answer. Synonymous to complex, there is a word that is synonymous to complex as used in the passage. Complex means twisted, so it is convoluted. Quite easy. Unbridled is uncontrolled. Let's look at the next passage. Dowry, according to the dictionary, means the property which a woman brings to her husband at the time of a marriage. No doubt. Originally, it must have meant property represented by the voluntary gifts given to the girl by her parents, relatives, and friends out of love and affection at the time of a marriage. So it was voluntary. Maybe these gifts were given to the girl in order to enable her to set up a new home out of a sense of social responsibility. That could have been the reason. But it was voluntary, right? Parents would love to give something as a gift out of, concern. The system of dowry must be as old as the institution of marriage itself. Absolutely correct. Every father, did I miss a line? I think I did. No. Yes, I did. It must also have been a universal practice, so it must not be only in India, right? Every father wants to give some presents, true, to his daughter when she is leaving the house. That is quite natural, right? And starting life afresh, there is nothing unusual, bad, abnormal about it. If a father wants to give something to his daughter, then there is nothing bad about it. But there's the change in the tone. However, right? So there'll be a change in the idea now.
As time passed, the system degenerated, it became worse into an evil, bad custom, right? It came to be looked upon as an evil and a curse. अभिशाप बन गया ये. The dowry became an all-important and a primary factor in a marriage. Absolutely right. आज बहुत सारे areas हमारे भारत में भी ऐसे हैं where there are a lot of people who reject marriage proposals only because they expect higher or more dowry, more money in dowry. It became necessary for the parents of the girl to give a good dowry to her, whether they could afford it or not. Absolutely right. And this is the trend. Worse still, the married life of a girl came to depend upon dowry. True. Marriage became impossible in the absence of a handsome dowry. Several girls whose parents could not afford a good dowry had to commit suicide as their greedy in-laws made their lives miserable. So बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिनको जान से हाथ धोना पड़ा है क्योंकि उनके पेरेंट्स अच्छी डाउरी नहीं दे पाए. What that meant was they were tortured by their in-laws and that engendered their deaths. Sometimes even girls are burnt to death. Sometimes brides are killed. Sometimes they have to commit suicide. Or this also results in broken marriages. So newspapers are full of reports carrying harrowing tales of brides being burnt to death or driven to hang themselves, जो अभी हम बात कर रहे थे, because of a constant nagging by their in-laws. ला और पैसे लाओ, और पैसे लाओ, और पैसे लाओ. Some of the stepdaughters of fortune choose the hangman's noose. Stepdaughters of the fortune मतलब किस्मत ने जिनके साथ stepdaughterly treatment दिया है, step treatment दिया है, खराब treatment दिया है किस्मत ने जिनको, वो हैंग कर लेती हैं खुद को, while others consume poison. कुछ poison खा जाती हैं और कुछ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग से जंप कर देती हैं ताकि वो खुद को क्लचेस ग्रिप. ये डाउरी, ये इनह्यूमेन इज क्रूअल, डाउरी सीकर्स के ग्रिप से खुद को आजाद कर सकें. It is really tragic, it is really tragic that in the progressive world of today, the evil of dowry continues to exist in all its horrid forms. Absolutely right. Many homes are broken और बहुत सारी families are driven to ruin. क्यों? Because they are too poor to afford a rich dowry. पहले in the selection of a bride, उसका family background, education और intrinsic worth वो कैसी थी, right? Qualities क्या हैं? Used to be the primary considerations. Now dowry is the first and the only consideration. बहुत जगह ऐसा होता है, सिर्फ पैसे देखे जाते हैं, अगर ज़्यादा है तो ठीक है. Of the matrimonial alliances. As a result, dowry, which was at one time a token of love and affection, जो कभी parents love and affection से दे दिया करते थे, has become a cause of oppression and exploitation of the worst order. Right, the first paragraph of the passage is an attempt to corroborate the dowry system with appropriate testimonies. No, उन्होंने support तो नहीं किया है. ये जरूर कहा है first paragraph में कि देखिए सिस्टम ऑफ डाउरी, उन्होंने सिस्टम ऑफ डाउरी को सपोर्ट नहीं किया, गिफ्ट्स को सपोर्ट किया है. डाउरी तो वो थी ही नहीं, राइट? दैट वाज ओनली a system of giving gifts, right? Is an attempt to deride the dowry system? No. In the first paragraph, he does not criticize the dowry system as brutal. Is an attempt to accentuate a backdrop? Yes. Blatantly what? What does it mean? Open and unashamed, right? Something negative that is openly practiced. Attempts at fierce criticism? No. First paragraph में सिर्फ एक background दिया है. If I take you back, here we go. यहाँ तक सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक एक background है. That's it. Okay. Let's move to question 2. Find the central theme of the passage. To present dowry as a system of tyranny. What is tyranny? Tyranny होता है जब दूसरे की मर्जी के बिना हम उससे कोई काम करवाते हैं. Subjugation जब दूसरों को हम oppress करते हैं. Which engenders impenetrability in many lives. Impenetrability मतलब we cause such conditions that it is impossible to improve their lives, to make a change in their lives. And this seems to be the best answer. डाउरी है ही ऐसा सिस्टम जिससे इतना ही खराब हो जाती हैं जिंदगियां कि आप उसको रिपेयर भी नहीं कर सकते. टू इम्प्लोर पीपल नॉट टू रिसीव गिव डाउरी. इम्प्लोर मतलब क्या? इम्प्लोर मतलब प्लीज ये कर दो, प्लीज डाउरी ना लो, प्लीज डाउरी ना लो. ऐसा तो उन्होंने कहा ही नहीं. रॉन्ग. To divulge information about the byproducts of the dowry system. Divulge means to
let out information that is otherwise meant to be secret. इसमें तो कुछ सीक्रेट नहीं है, ये तो जानी चाहिए बात बाहर. To fabricate information, झूठ वूट बना के कुछ, and criticize dowry system, वो भी नहीं हुआ है, कुछ fabrication नहीं है. These are truths. Describe the kind of tone. What is evocative? जो कुछ emotion evoke कराए. So dowry के against एक अवेयरनेस तो इवोक कराने की कोशिश की गई है. Seems to be a very good choice. Spiteful, नेगेटिव होता है ये, दूसरे का बुरा करने की इच्छा से कुछ किया जाए. Not at all. Excoriating, criticizing, correct. Criticize किया गया है डाउरी को, लेकिन इससे ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग है. Criticize with a reason किया गया है. There is a reason. What is the reason? To make you and me understand the impact of dowry. Lampooning means to ridicule. Ridicule किसी को नहीं किया है, किसी का मजाक नहीं बनाया. Which of the following is inferable? Human beings are losing moral values and being swayed by greed. बिल्कुल ठीक है. Human beings values खो रहे हैं और लालच के फ्लो में बहे जा रहे हैं. बिल्कुल सही. Many families have been subjected to anguish because of the dowry system. ये stated है directly. Sometimes the brides are killed because of greed. ये भी directly given है. तो ये आंसर्स नहीं होंगे. Parents of some girls are sometimes coerced to take recourse. Not at all. Parents do not take recourse. वो ये लिखा था कि जिन लड़कियों के पेरेंट्स नहीं दे पाते डाउरी, those parents, some of those parents or many of those parents, right? Rather those brides, those girls have to seek recourse in death. So ये भी आंसर नहीं हो सकता. Which should be an ideal title? The bedrock of tyrannical and coercive social structure. Right? अच्छा टाइटल है. बैकग्राउंड है ना, वो bedrock है ना डाउरी. Tyrannical or coercive. Coercion means when you make somebody do something without his or her will. Impact of social evils. Evils. Other evils have not been discussed here. Oppressive human beings, very vague. Dehumanization of brides for dowry, very good. दोनों में से अब एक लेना है हमने. Let's see. जब दो क्लोज चॉइसेस होती हैं, आप कैसे एलिमिनेट करते हैं? ये भी सही है. डिह्यूमनाइजेशन ऑफ ब्राइड्स फॉर डाउरी, ये भी सही है. दोनों सही हैं. बट इसको देखते हैं. द बेडरॉक ऑफ टिरेनिकल एंड कोर्सिव सोशल स्ट्रक्चर. व्हाट? ये क्लियर नहीं हो रहा है इससे, यहां से हो रहा है. राइट? ये बेटर है. व्हाई शुड दिस बी द टाइटल? बिकॉज दिस इनकैप्सुलेट्स द सेंट्रल आइडिया बेटर. वो डाउरी वाला आइडिया यहां पे नहीं आ रहा है इस टाइटल में, although it's a good title. Therefore, option D is the correct answer. Find out the correct synonym to the word inhumane. Inhumane means brutal, निर्दयी. Dogmatic means you must believe my theory, what I am saying is correct. ऐसे वाले लोग. Oppressive, you know the meaning, जो oppress करे सबको. Inhumane, correct. Derisive, जो criticize करे, and relegating, जो demote कर दे. So this is the best choice. Right then, so we have reached the next passage. In a materialist society of today, in which lure of power, the attraction of power, wealth and property dominates everything. हर एक को materialist चीज़ चाहिए, पैसे चाहिए, ऐशो आराम चाहिए. Non-violence seems a redundant term. What is redundant? Something that doesn't have value. Since the economic interests of one person clash with those of another, economic interests तो clash करते ही हैं. This exploitation, I'm really sorry for that. I have to select this again. Yeah. So this exploitation, in a way, leads to the possibility of violence, either in the form of physical force or threat of it. दोनों forms में. Modern technological developments have placed at the disposal of mankind almost unlimited means of exploitation. बहुत सारे हैं हमारे पास of the material wealth in the world. In the search for attaining यही material wealth, sometimes हमें violence करना पड़ता है to serve our ends, अपने फायदे के लिए, जो directly या indirectly ruin करता है, बर्बाद कर रहा है our society को. ये जो ट्रैजिक मार्च टूवर्ड्स रुइनेशन, बर्बादी की तरफ जो हमारा ट्रैजिक मार्च है, ये रुक सकता है इफ वी परस्यू द प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन वायलेंस एज अ गाइडिंग टॉर्च, एज अ गाइडिंग फोर्स. एम्फसाइजिंग द इंपॉर्टेंस, द सिग्निफिकेंस ऑफ नॉन वायलेंस. महात्मा गांधी ने कहा था, पीस विल नेवर कम
जब तक ग्रेट पावर जो है, द ग्रेट पावर करेजियसली डिसआर्म्स देम, जब तक बड़ी पावरफुल जो नेशंस हैं वो डिसआर्मामेंट नहीं करते, ये गन्स वन्स, ये वेपन्स को नहीं त्याग देते. इट सीम्स टू मी ये जो रिसेंट इवेंट्स हैं मस्ट फोर्स दैट बिलीफ ऑन द ग्रेट पावर्स. मेरा एक faith है that today burns brighter than ever. After half a century's experience of unbroken practice of non-violence, that mankind can only be saved through non-violence. सिर्फ non-violence है जो कि इंसानियत को बचा सकती है, और यही बाइबल का सेंट्रल टीचिंग भी है, जैसे मैंने बाइबल को समझा है, ये गांधी कहते हैं. In relation with rather propose of those western powers, strong powers जो बाइबल को वैसे तो मानती थी लेकिन बहुत आर्ममेंट में विश्वास भी करती थी, आर्म्स का यूज करती थी. हमें भी ब्रिटिश ने फोर्सफुली ही सप्रेस किया था विद द हेल्प ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनिशन. All the scholarly saintly beings like Christ, बुद्धा, महावीर etc. वो सभी ये मानते हैं. उन्होंने प्रीच किया था द प्रैक्टिस ऑफ नॉन वायलेंस और एम्फसाइज किया था नीड फॉर मॉरल कोड ऑफ कॉन्डक्ट दैट गिव्स ड्यू स्टेटस टू नॉन वायलेंस. सो वो सभी ने प्रीच किया था कि भाई आप लोग नॉन वायलेंस को अपना प्रिंसिपल मानिए और उसी पे चलें. नॉन वायलेंस इज नो अदर देन अ फिलॉसफी ऑफ लाइफ, a modus operandi, operative manner, which has received due recognition. East में उसको due recognition मिली है and is being recognized in the West also, और अब West में भी recognize किया जा रहा है. ये clear है, apparent है from the fact that 2nd October, the Gandhi Jayanti, has been declared to be observed as International Non-Violence Day every year from 2007. कितनी बड़ी बात है हमारे लिए. Non-violence has been interpreted differently by various people. Non-violence है क्या? अब आगे वो explained है. In general, इस टर्म का मतलब होता है किसी को फिजिकल नुकसान ना पहुंचाना, लेकिन ये इससे आगे जाता है. The concept is largely based on the fundamental good qualities of a human. ये completely negate करता है the use of threat, physical force and violence in any situation with anyone. Non-violence verbal abuse भी avoid करता है या negate करता है. One must avoid inflicting any kind of pain. किसी को कैसा भी दर्द देना अवॉइड करना चाहिए अगर आप नॉन वायलेंस के प्रिंसिपल्स पर चलते हैं. To win one's goals, however true and justifiable it may be, चाहे आपका एम कितना भी अच्छा हो, दूसरों को पेन नहीं देना. A situation, however difficult or adverse it may be, कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, it is to be tackled in cool, शांति से उसको हैंडल करना चाहिए. Avoiding violence in thought and action. थॉट, एक्शन, जुबान, किसी भी तरह का वायलेंस नहीं होना चाहिए. द फिलॉसफी ऑफ नॉन वायलेंस कॉल्स फॉर करेज. करेज क्यों? बिकॉज बर्दाश्त करना नीड्स करेज, स्ट्रेंथ एंड सेल्फ सैक्रिफाइस ऑन द पार्ट ऑफ द पर्सन प्रैक्टिसिंग इट. सो करेज चाहिए इसके लिए. इट ऑल्सो डिमांड्स अ ग्रेट डील ऑफ फॉर्टिट्यूड. इट वॉज देयरफॉर, इसीलिए महात्मा गांधी ने कहा था, नॉन वायलेंस इज नॉट द वेपन ऑफ द कावर्डली but of the brave and courageous. उन्होंने ये कहा था कि नॉन वायलेंस डरपोकों का हथियार नहीं है, इसके लिए हिम्मत चाहिए. हिम्मत वाले ही नॉन वायलेंट रह सकते हैं. द फिलॉसफी ऑफ नॉन वायलेंस इज बेस्ड ऑन लव एंड रिगार्ड फॉर एवरी क्रीचर. बिल्कुल ठीक. एंड फॉर ऑल लिविंग बींग्स. अब ऑल लिविंग बींग्स में एनिमल्स भी आ गए. सो नॉन वायलेंस सभी के साथ नॉन वायलेंस होने को कहते हैं, नॉन वायलेंट होने को कहते हैं. डूइंग किसी भी तरह का हार्म और इंजरी टू एनी लिविंग बीइंग नॉन वायलेंस के अगेंस्ट जाता है. एप्लीकेशन ऑफ फोर्स या फिजिकल और मेंटल फाइंड्स नो प्लेस इन द फिलोसफी ऑफ नॉन वायलेंस. आप किसी भी तरह का जोर ना डालें किसी पे. असली नॉन वायलेंस इवन रूल्स आउट डिफेंसिव मेजर्स बेस्ड ऑन वायलेंस. तो अगर कोई कहता है कि मैंने गन रखी है सेल्फ डिफेंस के लिए, जो ट्रू या जेन्युइन नॉन वायलेंस है वो उसे भी नेगेट करता है, वो भी वायलेंस ही है. ऑल राइट, द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द एक्सप्रेशन मोडस ऑपरेंडी? इसका मतलब ही होता है मैनर ऑफ ऑपरेशन. सो ऑपरेटिव मैनर, बहुत आसान. Which of the following is the theme of the passage? Non-violence includes a lot of fortitude. ये given है, very important. The execution of non-violence is not very easy. ये भी given है, very important. Many famous social activists advocate and propagate. ये भी given है.
नॉन वायलेंस इज अबाउट बीइंग कंसिडरेट, ये करेक्ट है। वाई, इसमें ना तीनों आ गए, कंसिडरेट, अनबायस्ड। अनबायस्ड क्यों? एनिमल्स तक की बात उन्होंने की है, माइंड यू, जो भी लिविंग है। कंसिडरेट क्यों? कंसिडरेट मीन्स वो लोग होते हैं कंसिडरेट हु थिंक अबाउट अदर्स, कि दूसरे को कैसा महसूस होगा। सो अगर आप कंसिडरेट हैं तो आप ये सारी चीजें इसके बीच में ही होंगी। आप में फोर्टिट्यूड होगा, आप में पेशेंस होंगे, आप नॉन वायलेंस को एग्जीक्यूट भी कर पाओगे। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी एन आइडियल टाइटल, जो सेंट्रल आइडिया को एनकैप्सुलेट करे। Imputation of non-violence, standpoint of the illustrious people, no, yes, scope of non-violence included है ना, क्या क्या है non-violence में, क्या क्या नहीं है, ये है, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है। There you go, fundamentals and scope, quite simple. Find out the meaning of brave. Antagonistic is aggressive, brawny is physically strong, burly is also physically strong, enduring and steady is the answer. कहा है ना, non-violence is a weapon of the strong or the powerful, not of the weak. Fine. I hope you have been able to understand these passages and questions and their respective answers. Very soon we shall meet you again. Thank you. Take care. Bye bye.